हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर। आज इसका पीडीएफ जो है आपको मेरी ऐप एडुसम ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्ट्रक्चर कोड्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। ये जो पेपर है एक्सटर्नल पेपर है, मैक्सिमम मार्क जो है 50 है, ड्यूरेशन 3 आवर्स है। तीन इसके अंदर ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 3 जो है कंपल्सरी है, जिसके अंदर 4 पार्ट्स हमको करने हैं, 20 मार्क्स के हैं। ग्रुप 1 के अंदर हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। ग्रुप 2 के अंदर भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क्स। ग्रुप 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेजर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा from the viewpoint of the relative cost and flexibility. Distinguish between primary source and secondary source of data. Second question, I defined attitude measurement. Discuss the importance of attitude measurement. Explain the concept of exploratory research design. Discuss its application. Explain in detail the role of research in business and industry. इसमें से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। उसी तरह ग्रुप 2 के अंदर है डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, discuss its feature, explain the role of statistics in management. Then there is a numerical question. Find if there is any significant correlation between the height and weight given below. Height in inches दिया हुआ है और weight in pound दिया हुआ है। 57, 59, 62, 63, 64, 65, 55, 58, 57। वेट इन पाउंड दिया हुआ है 113, 117, 126, 126, 130, 129, 111, 116 एंड 112। और इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन बी जो है गोल स्कोर बाय टू टीम्स ए एंड बी इन ए फुटबॉल सीजन वर एज फॉलोज। नंबर ऑफ गोल स्कोर इन मैच दिया हुआ है और ए टीम और बी टीम के जो है नंबर ऑफ मैचेस दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमने कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ईच केस हमने कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि कौन सी टीम ज़्यादा कंसिस्टेंट है। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट जो है डिफाइन प्रोबेबिलिटी, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। E जो है that is a numerical question. The CEO of a company planned to take two of his executive to a conference in Chicago. He plans to select a random one of the 8 executive in finance and one of the 10 executive in marketing. Of the executive in finance to have already traveled with the CEO, while 3 of the executive in marketing have traveled with the CEO before. So, what is the probability both the executive have traveled with him before? At least one of the executives selected has traveled with him before. None of the executive chosen has traveled with the CEO before. The finance executive has and the marketing executive has not traveled with the CEO before. तो ये भी probability का numerical question है। उसके बाद next question जो है वो भी numerical है। Comparison is made between two airlines to determine if the arrival time of the regular flight from New Delhi to Mumbai are off schedule by the same amount of time. Per 100 randomly selected flights, airline A was observed to be off schedule by an average time of 24 minutes with standard deviation of 11.4 minutes. For the 160 randomly selected flight of airline B, it was found the mean off schedule was 29 minutes with a standard deviation of 13.6 minutes. Do these data indicate any real difference in the mean off schedule time at a significant level of 1%? ग्रुप 3 के अंदर 4 क्वेश्चन है और 4 पार्ट्स जो है दैट इज ऑल आर कंपल्सरी। सपोज दैट ए बर्थ डिफेक्ट occur in 1 out of 10,000 birth on an average. Estimate the probability that in 25,000 birth none will have the birth defect. There will be 3 birth defects. State the empirical relation between the mean, median, and mode. Define hypothesis. Explain the concept of type 1 and type 2 error. Explain the concept of probability sampling technique.